Good morning, student. Welcome to Gyan Bharati Junior College of Science, Kulgaon. Dear student, previously we have seen here the errors in measurement, and in that topic we discuss the various types of the errors. Means here the instrumental error, personal error, random error, systematic errors. So in order to get accurate result of the experiment, or we get the standard value, we have to eliminate the errors in the measurement. So these errors cannot be eliminated totally, but it can be minimized to a certain value, so that we get the value near about the standard one. So here how the errors are estimated. So suppose here is the rod. This rod having this length, and this rod is measure the length, suppose 3.1 centimeter, 3.2 centimeter, 90 centimeter, and so on. So the question arises here, if the object is measured by the different observer and at the different times, then there is the some uncertainty in the measurement. So in order to get the certainty in the result or in the observations, we have to take the huge number of the readings, means data, and after processing the data you will get the appropriate result. So here suppose now here is the data, means this rod measures the length A1. A1 stand for the first reading, first observation. A1 is equal to some value, again A2 is equal to some another value, A3 is equal to another value again. So here the A1 is the first reading, A2 is the second reading, A3 is the third reading, and so on. An is the last reading. What I am saying, while taking the observations, that is taking the readings, we have to take the large amount of the data. And suppose A1 is the first reading, A2 is the second, A3 is the third, and A is the last. So from 1 to n, having the large amount of the observations, A1 having some specific value, A2 again having the some specific value, A3, A4, An. So now here is the number of readings, that is the n number of the readings, and n having the data A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8. So we have to take the arithmetic mean of this data, that is called as the mean value or the most probable value. So here is the mean value. First is the mean value or most probable value. That is the most probable value. So here what process can be done on the data? This is the data A1, A2, A3, An. So here taking the arithmetic means adding all these numbers, means here we have to take here the mean arithmetic, A for arithmetic mean. So here adding the first reading plus second reading plus third observation plus so on, that is the last An reading. Divided by the number of the observations, there is the n number of the observations taken. So here A1 plus A2 plus A3 plus
dash 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 so on. Last is the n. Number of the observations are n divided by the n means a1 plus a2 a3 plus so on an divided by n. So this value is the arithmetic mean, that is the algebraic mean of all the terms of all the observations. So here this can be taken, that is 1 upon n. This is the algebraic sum, that is summation sign is used starting from the I value 1 to ai. This is called as the arithmetic mean. Means here you can get here the value near about the standard one. This is the arithmetic mean or algebraic mean. This is called as the most probable value. याला काय म्हणतो आपण मोस्ट प्रोबेबल, म्हणजे शक्यता अशी आहे जी की ही व्हॅल्यू स्टँडर्ड व्हॅल्यूच्या जवळपास असण्याची जास्त शक्यता आहे, म्हणून याला म्हणतो आपण मोस्ट प्रोबेबल व्हॅल्यू. सो सेकंड इज द absolute error. Absolute error. Absolute error. Absolute error. तर काय करा आपण इथे मीन काढणार आपण a1 a2 a3 an. These are the observations. These are the readings taken by the observer. We calculate here the arithmetic mean, algebraic mean denoted by the a mean. So we get here the most probable value, but now second is the absolute error. Means here is the difference. Difference काय का है? Arithmetic mean जो निकाला है और each individual value. Each individual value कौन सी है? a1, a2, a3, so on. These are the individual observations taken by the observer. So here the absolute error is the, it is the difference between the which value? Most probable value and each individual value. This is the absolute error. But here the magnitude is taken into consideration. Means here a1 is separated from the a mean. Therefore here the first absolute error in the measurement a1 is given by, that is delta a1 is equal to mod of a mean minus a1. So this is the most probable value. A mean is the most probable value, that is the mean minus individual value. That is a mean minus a1 mod लिखा ये वैल्यू लेस हो सकता है, ये वैल्यू ज्यादा हो सकता है. Therefore mod taken into consideration. Second means here the absolute error in the second observation is taken, that is arithmetic mean a mean minus a2. Likely here the dash means here the absolute error in the third observation a3 is given, that is a mean minus an. This is the last an. So this is the absolute error. Means delta a1 is equal to a mean minus a1. Delta a2 is equal to mod of a mean minus a2. Means arithmetic means minus each individual value. This gives you the absolute error in that proper reading or the proper observation. So this gives you the absolute error in the first observation, second observation, and the last observation. Then next is the mean absolute error. Mean number third, mean absolute error. So it is the mean of, that is the algebraic mean, that is the sum, algebraic mean of absolute error. Absolute error कौन सा है? ये देखो delta a1, delta a2, delta a3, delta a. So you have to take here the mean, that is the delta a mean. It is written by the delta a mean. Delta a mean is equal to what? Delta a1 plus delta a2 plus delta a3, delta a3 plus delta an. Number of the observations is taken n. So here the delta a due to the mean absolute error is equal to delta a1 plus delta a2 plus delta a3
Yes, last is the delta A. That is the absolute error in the last reading or the observation. Divided by the number of the observations taken. Here is the n observations are taken. Therefore, this can be written like 1 upon n. N can be taken outside. Therefore, here is summation of I starting from the 1 to n, that is delta AI. So this gives you the what value means delta A1. Delta A1 का वैल्यू क्या है? A min minus A1. ये आपको पुट करना पड़ेगा वहाँ पे. Means अगर ये करते हैं तो ऐसा आ जाएगा delta A equal to delta A1 का वैल्यू. delta A1 का वैल्यू क्या है? mod of what value? A min minus A1 plus mod of A min minus A2 plus dash dash dash. Last में कौन सा है? mod of delta A min delta नहीं A min minus AN divided by number of observations कितने हैं? n number of observations. Means this can be expanded like this: A min minus A1, A min minus A2, A min minus A3, A min minus AN divided by n. So this can be written as 1 upon n summation of I starting from the 1 to n what value? Delta AI. So this is called as the delta A mean. This is the mean absolute error. Mean absolute error. So after that, the fourth is the relative error. So here the mean absolute error gives you the 1 by n summation of I starting from 1 to n AI. I is the number. So next is the number 4. What value? Relative error. Relative error. So relative error is nothing but it is the ratio of which quantity? Means mean absolute error divided by the which value? Most probable value. So here it is the ratio of what value? Mean absolute error. Mean absolute error ratio of mean absolute error to the quantity most probable value. The most probable value or mean value. So here the relative error can be defined by or given by relative error is equal to क्या है? It is the ratio of mean absolute error. Mean absolute क्या है यहाँ पे? Delta A mean means delta A mean divided by most probable value, that is A mean. So this is the what value? Relative error. Relative error can be defined as the ratio of what value? What value? Mean absolute error divided by the most probable value or the mean value. So this gives you the what value? Mean absolute error divided by the arithmetic mean. This gives you the relative error. इसे क्या बोलेंगे? Relative error. So next one is the number 3, percentage error. Percentage error. Next one is the percentage error. Number 3, percentage error. So percentage error is the error which is obtained by multiplying the given relative error by the 100. याला काय करावं लागेल? 100 ने गुणावं लागेल आपल्याला. 100 ने गुणावं लागेल. Multiply by 100. Means here the percentage error is equal to percentage error is equal to relative error into 100 का साइन. ये होगा आपका क्या?
परसेंटेज एरर मीन्स वैल्यू पुट अप करिए। वैल्यू क्या है डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100 और परसेंटेज का साइन। ये क्या हुआ आपका परसेंटेज एरर। दिस इज व्हाट इज द परसेंटेज एरर। This is the percentage error. Got it? So, in order to minimize the error, we have to take the arithmetic mean, that is the most probable value. Then next, calculate its absolute error. Then mean absolute error, relative error, and the percentage error. So, by calculating all these, you will get the standard value. That is the value near the standard one. So these are the calculation or the estimation of the error. So now we have to take this some examples based on these errors. So here a rod problems, a rod, the length of the rod measures the length of rod measures length and कितना है मेरा 5.10 सेंटीमीटर, 5.11 सेंटीमीटर, 5.12 सेंटीमीटर, 5.13 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करके बोला इसने नंबर फर्स्ट मीन वैल्यू, नंबर सेकंड क्या निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, नंबर थर्ड क्या निकालना है रिलेटिव एरर, एंड फोर्थ परसेंटेज एरर। ये चार चीजें मुझे निकालना है। ये प्रॉब्लेम में क्या दिया हुआ है, या प्रॉब्लेम में दिया है की हा रॉड आहे आणि या रॉडची लेंथ जी मोजलेली आहे ती किती आहे 5.10 सेंटीमीटर, 5.11 सेंटीमीटर, 5.12 सेंटीमीटर, 5.13 सेंटीमीटर। ठीक आहे, तर मला काय करायचं आहे यामध्ये मला मीन व्हॅल्यू काढायची आहे, ॲब्सोल्यूट एरर काढायचा आहे, मीन ॲब्सोल्यूट एरर काढायचा आहे, रिलेटिव्ह एरर काढायचा आहे आणि फायनली पर्सेंटेज एरर मला काढायचा आहे। तर हे कसं काढतात? सो नाउ यू हॅव टू टेक द मीन ऑफ ऑल दिस व्हॅल्यू। सो हियर नंबर फर्स्ट इथे का लक्षात सोल्यूशन काय करतो आपण पहिला मीन व्हॅल्यू। सो हियर गिवन वैल्यूज आर क्या है a1 इक्वल टू कितना 5.10 सेंटीमीटर, a2 इक्वल टू 5.11 सेंटीमीटर, a3 इक्वल टू 5.12 सेंटीमीटर, a4 इक्वल टू 5.13 सेंटीमीटर। कितने ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 मींस 5.13 सेंटीमीटर। Yeah, that is the number of observations are 4. So you have to take the mean value. So mean value is equal to therefore a mean is equal to what value a1 plus a2 plus a3 plus a4 divided by the number of observations in there. So here putting the value in the given formula you will get the mean value. So here putting the value of a1 in this formula, so arithmetic means that is a mean is equal to what is the value of a1? a1 is 5.10 centimeter, 5.10 plus beta इधर आ जाओ 5.10 5.11 plus 5.12 plus 5.13 divided by the number
values are 4. Right here take 4. So add this number means 5.10, 5.11, 5.12, 5.13. कितना होता है? 1 plus 2 3, 3 plus 3 6. क्या है? nothing. 1 2 3 4. 5 4 20 means 20.46 means 20.46 divided by 4. So it will be the 5 4s are 20 is 5. 5 1 5. अब कितने का 5 1 और कितना बचता है 2. 5 4 5 कितना सेंटीमीटर एरिया आया हमारा अरिथमेटिक मीन आया. दिस अरिथमेटिक मीन. अब सेकंड मुझे क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर इन ईच इंडिविजुअल वैल्यू निकालना. देखो सेकंड क्या है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है. एब्सोल्यूट एरर मींस एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? अरिथमेटिक मीन माइनस ईच इंडिविजुअल वैल्यू मीन्स यहाँ पे पहले में निकालते हैं डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या होगा? मॉड ऑफ A मीन माइनस A1 इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? देखिए 5.11 5 माइनस A1 की वैल्यू कितना है? 5.10 करिए इसका. ये कितना आता है? 5.11 5 माइनस 5.10 कितना आता है? ये है 5100 मींस 0.015 मींस 0.015 इसका फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर. ऐसे ही सेकंड निकालते हैं. इस डेल्टा A2 इज इक्वल टू डेल्टा और वैल्यू इस डेल्टा A मीन माइनस A2 निकालना है. means this will be that is mean का वैल्यू 5.115 माइनस कितना है 5.11 means ये कितना आएगा? चलिए 5 ले जाएगा means 1 0 1 0 और ये 0 means 0.005 is the second absolute error. So similarly we come here to find the which value delta A3 is equal to क्या? मीन वैल्यू कितना है? 5.115 माइनस A3 का वैल्यू कितना है? 5.12. इस करिए 5.115 माइनस कितना करना है? 5.120. अब करिए पर लिखने नहीं आएगा तो क्या करेंगे? बड़े में से छोटा करेंगे अपन. ठीक है तो फिर ऐसा करेंगे मींस 5.120 माइनस 5.115. ठीक है 10 में से 5 है 5 दे दिया 0 ये 0.005 मींस हियर 0.005 डेल्टा A4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5.115 माइनस कितना है 5.13. कहिए ये कितना आता है? ये बड़ा नंबर है इस 5.130 माइनस 5.115 10 में से 5 कैसे दिया 3 में से 2 1 ये 0 और ये 0 कितना बचता है? 0.015 अभी जो मैंने निकाले हैं क्या है? डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 ये क्या है? These are the absolute error काय में each individual वैल्यू में है. A1 में कितना, A2 में कितना, A3 में कितना और A4 में कितना. अब मुझे क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन निकालना है तो क्या होगा? जोड़ दो डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देयरफॉर मीन एब्सोल्यूट एरर mean absolute error is equal to क्या निकालेंगे? mean डेल्टा A mean is
इज इक्वल टू क्या करते हैं जोड़ दो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय इनकी वैल्यू कितना है फॉर ऑब्जर्वेशंस वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा A1 का कितना आया 0.015 प्लस सेकंड 0.005 प्लस 0.005 प्लस 0.015 divided by 4. करिए एडिशन therefore adding all these कितना आता है देखिए करिए एडिशन in 0.015 0.005 0.005 plus 0.015 करिए एडिशन 5 plus 5 10 10 15 और 20 0 कैरी 3 4 8 0 कितना आया 0.040 मींस ये आया कितना 0.040 डिवाइड कितना तो करिए डिवाइड मींस आपका डिवाइड कितना होता है 0.04 बनता 4 और 3 मींस कितना आया 0.010 अब ये 0 देने से कोई फायदा नहीं है ऐसे भी बोल सकते हैं 0.01 सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए अब मुझे क्या निकालना है लास्ट में रिलेटिव एरर मींस स्टेप नंबर 3 इज द रिलेटिव एरर सो रिलेटिव एरर निकालना है रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मान वैल्यू डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन ये देगा आपको क्या रिलेटिव एरर देयरफॉर डेल्टा ए मीन का वैल्यू कितना है क्या 0.010 डिवाइडेड बाय ए मीन कितना है था पहला वैल्यू ए मीन का वैल्यू 5.10 प्लस 5.2 कितना है था 5.15 ये था ए मीन है इसे करेंगे जो बताया वो करेंगे सो दिस इज द रिलेटिव एरर नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं रिलेटिव एरर इनटू 100 राइट डाउन हियर द रिलेटिव एरर इनटू 100 यूज द परसेंटेज साइन रिलेटिव एरर कितना आया 0.010 डिवाइडेड बाय कितना 5.115 इनटू कितना 100 या क्या आ जाएगा आपको परसेंटेज आएगा करिए मैंने इसको कितना किया 100 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा ये 1 ये जो आएगा 1.0 डिवाइड बाय कितना 5.115 ये आ जाएगा so this will give you the percentage error you know to calculate the division so this is about our chapter number 1 units and measurement here our first chapter units and measurement comes to an end that is I officially declare this chapter is finished now thank you for watching my video in the next video I will take the second chapter thank you so much